नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आप सबको वंदे मातरम। मेरा नाम है आरकेबी, पंडित आरकेबी नहीं है, आरकेबी है। जी हाँ, मेरा नाम है आरकेबी। आप देख रहे हैं मुझको नेशन नाउ पर। मैं हूं इस वक्त नेशन नाउ पर, और नेशन नाउ कहां है? हमेशा आपके साथ। ये हमारा छोटा सा शो है। आप लोगों ने अभी तक इसको इतना समर्थन दिया, इतनी मोहब्बत दी, इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिस शो इज डेडिकेटेड टू इंडियन एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष, ज्योतिष मतलब स्टडी ऑफ लाइट, रोशनी, ज्योति, रोशनी, रोशनी की स्टडी। एंड डू रिमेंबर, एज फार एज इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज कंसर्न, हिंदुस्तानी एस्ट्रोलॉजी जो है वो किससे रिलेटेड है? उसका संबंध किससे है? धर्म से है। धर्म से क्या मतलब हुआ इसका? दीज आर नॉट जस्ट प्रेडिक्शंस। याद रख लीजिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो होती है, दे आर ओनली रिलेटेड टू प्रेडिक्शंस, एंड इन एनी इवेंट the very fundamentals, as I explained yesterday, the very fundamentals of Western astrology themselves are wrong. Western astrology यानी पश्चिमी ज्योतिष विद्या जो है, क्योंकि आपके प्लैनेट्स की जो डिग्री है पिछले 2000 साल में न जाने कितनी ज्यादा मूव कर चुकी है। हर 72 साल में एक डिग्री से मूव करता है प्लैनेट, जिसकी वजह से आज की तारीख में वास्तविकता में मेष कहां है, मेष राशि कहां है, वृषभ राशि कहां है, जेमिनाई कहां है, कैंसर कहां है, लियो कहां है, स्कॉर्पियो कहां है, ये उनको पता ही नहीं है। ये जा रहे हैं कब से? 500 ईस्वी यानी 500 सीई, क्रिश्चियन एरा में जो पोजीशन थी प्लैनेट्स की, उसके ऊपर जा रहे हैं। जहां तक हिंदुस्तानी एस्ट्रोलॉजी का प्रश्न है, याद रख लीजिए, we base our astrology on the fixed stars, on the nakshatras. In effect, you can't go wrong. Do remember that. Because you know, every 72 years, there is a change of 1 degree. Why does that happen? Because the entire solar system is also in an ecliptic. वो ecliptic को पूरा इक्लिप्स क्या होता है? इक्लिप्टिक क्या होता है आपको मालूम है ना? इट इज नॉट लाइक अ सर्कल। उस इक्लिप्टिक को पूरा खत्म करने के लिए या पूर्ण करने के लिए 26,000 साल लगते हैं। कितने? 26,000। और ये कहां से आया है? ये भारतीय ज्योतिष विद्या से आया है। वो कहां से आया है? वो सूर्य सिद्धांत से आया है। और सूर्य सिद्धांत जितने भी विशेषज्ञ हैं हिंदुस्तान के, बाहर के नहीं, don't go by what it says on Wikipedia, because that guy who has written the article on Wikipedia on Surya Siddhanta and on Vedic astrology, by the way, is completely and totally influenced by the West. In all likelihood, he is possibly one of those guys, you know, Romila Thapar, Dr. Irfan Habib, Bipin Chandra, that gang. Wikipedia actually says कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो हम अभी जानते हैं, दैट वाज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय हेलेनिस्टिक एस्ट्रोलॉजी यानी ग्रीक एस्ट्रोलॉजी। आर यू मैड? टॉलेमी, ग्रीक एस्ट्रोलॉजी और ग्रीक एस्ट्रोनॉमी इज बेस्ड ऑन द टॉलेमिक व्यू ऑफ द वर्ल्ड, व्हिच प्लेसेस द अर्थ एट द सेंटर। हिंदुस्तान में सूर्य सिद्धांत के मुताबिक सूर्य केंद्र में है, बाकी जितने भी प्लैनेट हैं वो उसके आसपास घूम रहे हैं, याद रख लीजिए। Now, let's come to what's going to happen in 2023. We discussed it yesterday also when we had my dear friend Rajesh Hasija with me. We'll have a couple of other guys also tomorrow. Today, tonight, or rather right now, not tonight, right now, we will discuss what's going to happen this year. और बहुत लोगों ने लिख के भेजा है कि आप कृपा करके हमें बताएं, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध है, युद्ध की स्थिति हमेशा जो रहती है, उसमें क्या होने वाला है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का क्या होने वाला है? बलूचिस्तान का क्या होने वाला है? ये सब चीजें आपने पूछी हैं। और चाइना के साथ क्या युद्ध होगा या नहीं होगा? सबसे पहले तो मैं एक चीज आपको बहुत क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं, कोई युद्ध नहीं होगा। युद्ध नहीं होगा। 1971 जैसी स्थिति जरूर उत्पन्न होगी। 1971, याद रख लीजिए, 16 दिसंबर 1971, जब जनरल नियाजी ने सरेंडर किया
Now, that, of course, is the Chinese footage. I don't know why we are running that Chinese footage right now. Can I have the footage from Bangladesh, please? I'll be so grateful. I don't really know why these guys love the Chinese so much. Maybe because most of the equipment is Chinese equipment which is coming out right now. हाँ, एक चीज की prediction मैं दे सकता हूं आपको कि now it will be reverse. Hindustan में manufactured equipment will also be bought by the Chinese, just like the Chinese are buying our medicines from all over the world. Right. December 16th, 1971, what happened? General Niazi surrendered. General A.A.K. Niazi, इमरान खान नियाजी के चाचा या ताऊ या जो भी थे, चाचा थे शायद, उन्होंने हथियार डाले लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने, याद रख लीजिए। और वो युद्ध के बाद हुआ, प्रॉपर कॉन्फ्रंटेशन के बाद हुआ, युद्ध के बाद हुआ। बांग्लादेश की मुक्ति बाहिनी और हिंदुस्तानी फौज ने मिलकर के पाकिस्तान को मजबूर किया कि पाकिस्तानी 93,000 फौजी, 93,000 Pakistani soldiers laid down their arms. That's what happened. Now, will that happen again? No. But something very similar will happen. Let me tell you this. Something very, very similar is going to happen without firing a bullet. First, let's take a look at what took place that day. Let's take a look at how the foreign press covered it in 1971. But before we go there, before I show it to you, let me also tell you, something similar is going to happen as far as the Pakistan occupied Kashmir is concerned. जो so-called Pakistan का आजाद कश्मीर है, that Pakistan occupied Kashmir will come to India. The process will start somewhere around September, October 2023. 2023 सितंबर अक्टूबर में वो प्रोसेस शुरू होगा। क्यों होगा वो भी सुन लीजिए। क्योंकि भारत का लग्न, calculated on the basis of midnight, August the 15th, 1947, वृषभ लगन है, टॉरस लगन। और टॉरस लगन का अगर आप विश्लेषण करें शनि की पोजीशन को देखते हुए, because Saturn is going to move on January 19th, where it will come into its own मूल त्रिकोण राशि, याद रख लीजिए हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त होने वाली है। वही सिचुएशन तारक मंडल में 1971 दिसंबर में थी। कोई ज्योतिषी आपको ये नहीं बताएगा, याद रख लीजिए। No astrologer will tell you this. I am telling you this. Remember, you heard it right here first. POK, the process of the amalgamation, return of Pakistan occupied Kashmir to India will start somewhere around September, October 2023. And remember, you heard it right here first on Nation Now from me, RKB. Now let's take a look at what took place on December 16th, 1971. Before the Indian Army can think about leaving Bangladesh, 93,000 Pakistani prisoners of war will have to be transported to India. 25,000 of them are here in the Dhaka cantonment getting ready to leave, guarded from possible Bengali vengeance by the men with whom less than a fortnight ago they were at war. The Indian Army's Chief of Staff, General Sam Manekshaw, who's been paying a 2-day visit to his troops in Dhaka, says that at the moment some 3,000 prisoners of war a day are being taken out of the country. He hoped that by the beginning of next month the daily average would be 10,000, and that in any case by the 15th of January all of them would be in Indian prisoner of war camps. By that date too, the General said, he would have reduced Indian armed forces here by 25,000. But they still can't all go home. For one thing, they're the only agency in the area capable of seeing that the 10 million Bengali refugees now in India get safely back to Bangladesh. For another, Indian soldiers, no matter how much the Indian government likes to play this down, are the only people capable of keeping law and order here and protecting minority groups from Bengali retribution. In addition, the army is safeguarding the lives of those Bengalis who ran the civil administration for Pakistan. The Bangladesh government is setting up a war crimes tribunal to try Dr. Malik and his colleagues. Will the Indian army be told by Delhi to hand them over? I asked Mr. D.P. Dar, Mrs. Gandhi's special envoy to Bangladesh. We are in the horns of a dilemma, I must admit to you. On the one hand, we do not want to do anything
which is against the norms which is, of international behavior. Nor do we want to do anything, on the other hand, which would even remotely impinge on the sovereign rights of the Bangladesh government and Bangladesh state. What does that mean in practice? Are you going to hand people over to a war crimes tribunal or That not? means, for the time being, that the position is being legally examined. As any victorious army would be, Indian armed forces are now deeply involved for the foreseeable future in the way this new country is going to develop. Richard Lindy, News at 10, Dhaka. Right, that's exactly what's going to happen in Pakistan-occupied Kashmir. But it won't happen with the army. The army will, of course, have to go in later, but I'll tell you what will happen. The people of Pakistan-occupied Kashmir will force the administration in Islamabad that they want to go back to India. हिंदुस्तान वापस जाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग कहेंगे, और याद रखिए, मैं दोहरा रहा हूं, that situation will arise this year. In effect, what Mr. Amit Shah promised in Parliament, अमित शाह जी ने जो भारतीय लोकसभा में, भारतीय पार्लियामेंट को, भारतीय संसद को वादा किया था, जब उन्होंने आर्टिकल 370 रिपील किया कि Pakistan occupied Kashmir will be taken back by India, will really happen, and it'll happen without firing a bullet. Let me tell you this. It'll happen without firing a bullet because I'll tell you what's happening right now. The Pakistani economy is in meltdown. There's a huge crisis. The Pakistanis have already defaulted, and that default is going to lead to a downward spiral which will result in complete erosion of the authority of the Pakistani state all over the place. And by the way, as far as Kashmiris are concerned, जहाँ तक के कश्मीरियों का प्रश्न है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो कश्मीरी हैं, वो देख रहे हैं अभी कि इंडियन जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है. You have the railways. हिंदुस्तान में चनाब के ऊपर इंडियन रेलवेज ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया है over the Chenab Valley. याद रख लीजिए. उसके अलावा there are hospitals, there are schools, there are dispensaries, there are playing grounds, there are Kashmiri athletes, sportsmen, engineers, doctors who are getting a chance to go back and join the mainstream. That's what's happening in Indian Kashmir. उसके अलावा एक छोटी सी मैं आपको example देता हूँ. One very small example. There's a boy called Shah Faisal, Kashmiri Muslim boy who topped, जिसने top किया किसमें? IAS exams में. UPSC के जो एग्जाम होते हैं ना, जिससे आप IAS ऑफिसर बनते हैं, IFS बनते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, उसने टॉप किया था, हमारा टॉपर था वो. उसके बाद 1 या 2 साल सर्व करने के बाद उन्होंने तय किया कि भाई मैं चुनाव में इस बार लड़ूंगा, अपनी पार्टी लॉन्च करूंगा. उन्होंने रिजाइन कर दिया, अपनी पार्टी लॉन्च करी. उसके बाद क्या हुआ जानना चाहेंगे? उसको मालूम पड़ गया कि जहां तक के राजनेताओं का प्रश्न है, राजनीतिज्ञों का प्रश्न है, राजनीति का प्रश्न है, वहां पर उनकी दाल गलने वाली नहीं है. वो अपने कश्मीरी भाइयों के लिए ज्यादा काम कर सकते हैं, उनको ज्यादा लाभ पहुंचा सकते हैं अगर वो सरकार के हिस्से बने रहें. उन्होंने चिट्ठी लिखी किसको? आदरणीय अमित शाह जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, और ये कहा सर मैं वापस आना चाहता हूं. May I come back? Do you know something? Mr. Amit Shah welcomed him back. And as he himself writes, as a Kashmiri Muslim, I have been pampered by the Indian state, by Mother India. That's what he said. This is something the Pakistanis will never understand. That's what Shah Faisal says. At the moment in Kashmir, every boy is a Shah Faisal. Yaad rakh lijiye. And we have our own Umran Malik, who led the pace attack against the Sri Lankan team just yesterday, right here in Mumbai. Absolutely wonderful watching him. And I've been rooting for him now for a long, long time. I tell you what, POK is a done deal. Azad Kashmir, so-called Azad Kashmir को पाकिस्तान से आज़ादी मिल जाएगी. And they'll be back here. That's it. That's what's going to happen as far as Pakistan is concerned. Without a conflict. Conflict है. कहाँ पर conflict है, कहाँ पर उसकी background है, वो अलग है. That is layer upon layer upon layer. That is a very layered procedure. The Pakistani rupee is going to fall further. It is already, the dollar is already trading at 225 rupees to a Pakistani rupee. In fact, even for 300 rupees, you cannot find a dollar in the US, in Pakistan. You can't find a US dollar in Pakistan right now, but that's a separate issue.
We'll come back to that in some other show. लेकिन एक चीज तय है, हमारा हिस्सा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान का जो पाकिस्तानियों ने धोखे से 1948 में लिया, वो हिंदुस्तान को वापस मिल जाएगा इसी साल में. The procedure will start October, September 2023. Now we come to China. It's very simple. Astrologically speaking, very, very simple. The crisis in China is going to deepen. Already, the Chinese are going all over the world. हर जगह पर चाइना जा रहा है, इधर उधर उधर, इंडियन मेडिसिन खरीदने के लिए, अपने कोविड पेशेंट्स के लिए. उसके अलावा most of the Chinese industry, most of the huge sweatshops that they had opened all over the place, they're all going to shift to India. सब हिंदुस्तान आ रहे हैं. और उसका प्रोसेस जो है जुलाई अगस्त तक इस कदर बढ़ जाएगा that the Chinese economy, which was facing collapse even earlier, will now totally collapse. I'll tell you why. There are two reasons for it. One, of course, is COVID. The other reason is the purchasing power of Europe and the Western world has really come down because the economy of the world has slowed down. China was the manufacturing hub of the world. They were not selling goods to Chinese. They were selling goods to the rest of the world. Now the rest of the world is not buying because the rest of the world doesn't have the money. So China can't earn anything. आज की तारीख में बाकी दुनिया में क्योंकि इतनी मंदी आ गई है, बाकी दुनिया के पास पैसा नहीं है, इस वजह से बाकी दुनिया जो है Chinese manufactured goods नहीं खरीद रही है. India has no such problems. क्यों? क्योंकि हमारी सबसे बड़ी मार्केट जो है हिंदुस्तानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए, वो हिंदुस्तान है. 130 करोड़, मतलब इनफैक्ट 140 करोड़ का देश हो गया है. 140 करोड़ का देश. सिर्फ देश नहीं है साहब, ये 140 करोड़ लोगों की मार्केट है. और इस मार्केट को किसने बनाया है? Starting with Dr. Manmohan Singh in 1991, with P.V. Narasimha Rao as Prime Minister, and now with Mr. Narendra Modi, and the manner in which he has rejuvenated and resurrected the Indian economy. India is the only bright spot left in the world economy. That's what the IMF and the World Bank says. And astrologically speaking, the Chinese will withdraw. याद रख लीजिए, जो चाइनीज फौज है that will withdraw. PLA के जो सोल्जर्स हैं, पब्लिक लिबरेशन आर्मी के सोल्जर्स जो हैं, वो खुद हाथ जोड़ करके बोलेंगे कि भाई हमें छुट्टी दीजिए, हम हिंदुस्तान के बॉर्डर पर सर्व नहीं करना चाहते. Now can we have that footage on, please? I really would like to see that footage on, with the Indian army boys beating up the Chinese soldiers. I don't really know why these guys are not showing it now. When you have to show it, why didn't you show it? Can we have that on, please? I really would like to see that. There it is. The Chinese army being given a lesson in discipline by the Indian army. हिंदुस्तान की फौज जरा अनुशासन सिखा रही है चाइनीज फौज को. याद रख लीजिए. और यही होने वाला है बाकी हर सेक्टर में भी, हिंदुस्तान और चाइना के बीच में. And remember, you heard this right here first. तो आज हमने क्या बोला? नंबर 1, the Pakistani economy is going to collapse. It already has collapsed. पाकिस्तानी इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था के कोलैप्स होने की वजह से, बिल्कुल गिरने की वजह से, पाकिस्तान के हो सकता है बहुत टुकड़े हो जाएं. मैं ये नहीं कह रहा कि होंगे, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर. लेकिन ये पक्का है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान जो है वो वापस, उसका प्रोसीजर शुरू हो जाएगा सितंबर-अक्टूबर 2023 में. क्योंकि दैट्स व्हाट द ट्रांजिट से. प्लैनेटरी पोजीशंस यही कहती हैं कि 2023 में हिंदुस्तान का जो लॉस्ट लैंड है, जो जमीन आपने खोदी है, वो वापस आपके पास आने वाली है. ये कोई एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा. मतलब जो आज की तारीख में बड़े एस्ट्रोलॉजर फिर रहे हैं ना हर जगह पे, जो कहते हैं कि 2023 जो है वो केतु का साल है, इस किस्म के लोग आपको नहीं बताएंगे. जो असली एस्ट्रोलॉजर होगा वो जरूर बताएगा आपको. इसके अलावा जहां तक चाइना का प्रश्न है,
the Chinese will retreat everywhere in the face of growing power from India. मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो, हमारा चैनल पसंद हो, there is a subscribe button right over here. Please click on that. Subscribe to the channel. और उसके अलावा आपको अगर कुछ कहना है, please do send in your comments in the comment section. I would love to read them out right over here tomorrow. आप अपने comments भेजें, यहीं पर आपके नाम के साथ मैं आपके comments यहाँ पर पढ़ूंगा. That's it for me on this show, Astrology with RKB. I know it sounds very strange, but I suddenly realized that we really need to bring in some clarity as far as astrology is concerned. That's why we started this show on Nation Now. Nation Now हमेशा आपके साथ, याद रख लीजिए, हमेशा आपके साथ. Of course, in the evening, both Advocate Pradeep Nambiarji and myself will be here to talk about the latest problems with regard to Mumbai and their solution, and of course, all over India. That's it. That's all we've got for you in this show. आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Keep watching Nation Now.